1500 फार्माकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का फोर्थ लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे 5 हाई यील्डिंग एमसीक्यू जो आपके नीट पीजी, एफएमजी, यूएसएमएलई और AIAPGET एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन वही रहेगा। हम एक की कंसेप्ट बताएंगे हर एक क्वेश्चन का एंड उसका एक क्लिनिकल यूज। So we'll start with the first question, that is, which of the following is weakly acidic drug? So we have to think about the acidic properties of the following options. So yes, the options that you guessed, I think you're right, that is phenytoin sodium. So why we have to choose this answer, and we should know why we uh, reject the other options. So the first option, that is atropine sulfate, ये एक weakly basic drug होता है जो कि alkaloid group का part है. So it's not an acidic drug. Chloroquine, I think everybody knows, it is used in malaria treatment and ये weak base है. And the next option is ephedrine hydrochloride, ये एक big category का, that is commonly used in respiratory condition like asthma. And phenytoin sodium, that is the right answer, ये anti-epileptic drug है. एंड एसिडिक नेचर की वजह से इसकी अब्जॉर्प्शन और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं. एंड द की कंसेप्ट अबाउट दिस क्वेश्चन इज वी हैव टू थिंक जो वीक एसिडिक ड्रग्स हैं वो एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे कि स्टमक में, क्योंकि उसका pH लो होता है. एंड द क्लिनिकल यूज ऑफ phenytoin sodium, दैट इज योर आंसर, इज I think everybody knows it is used in epilepsy. And ये the next important point about this is एक narrow therapeutic index है and इसकी property हमें monitor करनी पड़ती हैं. So the next question is the most important factor which governs diffusion of the drug across capillaries, not in brain. Okay, so you have the following options. So let's think about the answer. So yes, I think you guys guessed the right answer, that is lipid solubility of the drug. So we have to rule out the other options. So blood flow through capillaries, that is an important factor, right? But it is not passive diffusion का एक major part नहीं होता. And the next is that the right answer, lipid solubility, because a passive process के लिए सबसे ज़्यादा important होता है क्योंकि cell membrane में ही the lipid bilayer बनी होती है. And the next option is pK value the drug. ये ड्रग की आयनाइजेशन को इफेक्ट करता है लेकिन डिफ्यूजन का प्राइमरी फैक्टर नहीं होता है. एंड pH सेम आयनाइजेशन को इफेक्ट करेगा, लिपिड सोल्युबिलिटी के बिना डिफ्यूजन नहीं होता है. सो द की कंसेप्ट अबाउट दिस क्वेश्चन इज लिपिड सोल्युबल ड्रग्स easily cross most of the biological membrane except blood-brain barrier because it requires active transportation. And the main highly lipid soluble drug that we consider nowadays is used in anesthesia for, that is thiophantal, that for its rapid onset use के लिए हम यूज करते हैं. The next question is question number 3 of today's session, that is active transportation of the substance across biological membrane have the following characteristic except. We have to just remember always the word except, not in the option, because such questions are very easy but we can do silly mistake in that. So I think you all guessed the right answer. Yes, it is pH dependent is the right answer, and we have to exclude the other options. Active transportation, yes, it is active, so it is specific obviously. And the second option is pH dependent. Active transportation is ATP is dependent, it uses energy, not pH. And next is it is saturable. Yes, carrier proteins are limited binding site की वजह से इसका saturation is possible. And it require metabolic energy as we discussed above. Yes, ATP use करता है, it uses sodium and potassium pump. So the key concept about this question is active transportation energy dependent होता है, against concentration gradient काम करता है. And its clinical use we can say in levodopa drug, that is active transportation से blood से वो के अंदर क्रॉस करता है via which transportation, that is amino acid transportation. So the next question we have is TCA, that we all know can alter the oral absorption of many drugs. So we have to think about the mechanism of TCA
what is a mechanism, and we can get a very nice clear cut answer. So yeah, I think you have guessed the right answer, that is altering gut motility. So we have to rule out the another option, that is complex formation. Okay, so T is already a big molecule, and yeah, it won't form any complex, right? So it won't be the answer. The next is the correct answer, that is altering gut motility. This is the actual mechanism ना, कि that reduce the mortality of the GTA, मतलब and उसी की वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन कम, मतलब इट स्टे इन योर स्टमक फॉर लॉन्ग टाइम. सो वो इम्पैक्ट ज़्यादा करेगा, जल्दी से वो ऑनसेट टू डाइजेशन नहीं होगा, तो वी हैव मोर टाइम टू यूटिलाइज द ड्रग एंड इट अफेक्ट एंड इट altering gut flora. Yeah, it won't be right answer because it is not an antibiotic. Okay, and the next is damaging gut mucosa. That is also, it's not pH related thing and etc, so it's not damaging the mucosa. So the key concept about this is slow mortality की वजह से ज़्यादा टाइम ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होगा. एंड वी ऑल नो अबाउट TCA, राइट. ये हम तब यूज़ करेंगे जब पॉली फार्मेसी में इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे हम मल्टीपल ड्रग्स हमने पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए होते हैं. So the next question of today's session is about bioavailability, and I think that's a very easy question, but we got confused between two options, but we have to rule out the others also. So I think you have guessed the right answer, that is the percentage of administered drugs that reaches systematic circulation in the unchanged form is the right answer. But why other options are wrong? As first we know it's the correct answer, perfect definition actually, and the second is kind of same, but ये bioavailability का ना indirect measure है ना, it's not the exact definition. And the next is a ratio of oral administered drug to feces excretion. ये absorption failure बताता है कि ड्रग ने काम ही नहीं किया, ड्रग फेलियर हो गया है, दैट इज़ नॉट बायो अवेलेबिलिटी. एंड रेशियो ऑफ अनचेंज ड्रग टू मेटाबोलाइट, ये मेटाबॉलिज्म को इंडिकेटर है, बायो अवेलेबिलिटी का नहीं है. द की कंसेप्ट अबाउट दिस क्वेश्चन इज ओरल ड्रग्स का बायो अवेलेबिलिटी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है. एंड द क्लिनिकल यूज़ हम यूज़ करते हैं ओरल एंड IV ड्रग्स के लिए. सो आई होप यू लाइक द सेशन. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे गाइस.